Good evening, dear educators. So, I'm Nandini, again with the session for you all. I can see many of the familiar names which I have read yesterday as well in my previous session. Many of them are new. So, welcome to a new session under the heading of Every Child Matters. So, today, what we are going to discuss, or today, what we are going to just share, or we can say just here, these sessions are all about sharing each other's experiences and learning from them. And the things which we'll be learning, we'll be implementing, obviously, in our teaching or in our further, like you can say, our curriculum or our further behavior or further classrooms, right? So yes, am I audible to you all? Yes, ma'am. Okay. Okay. Thank you so much. So basically, what is the topic today? It is Every Child Matters. That is inclusive teaching practices for today's classroom. So basically, we nowadays it's not the teaching, or you can say the schooling is not teacher centered, it is child centered. Somewhere we are focusing more upon children rather than focusing upon teachers. Or you may simply say that we always need to focus if we want that education, if we want that the learning should be best, then the only thing that we can do is okay. So yes, the only thing we can do is that we need to be we need to see every child. So this is all about today's topic that every child matters. So basically, what are the learning outcomes after the end of this session will be? What are the learning outcomes? One is that we'll understand what this word inclusion means. जैसे starting की slide में I have mentioned the word inclusion. इसका meaning क्या है? Then further we'll discuss that recognize diverse learner needs. Now मतलब under being a teacher, being an educator, we are meeting number of learners every now and then, right? Every day we are meeting number of people, number of children, I can say, right? So they all are different. So we have to recognize them and we have to recognize their needs. This is what we are going to discuss in further slides. Then is learn practical inclusive teaching strategies. What are some of the teaching strategies which we as a teacher can implement into our curriculum to make our teaching or make our learning best? Then is create a classroom where every child feels valued. Nowadays, this is one of the major things that I always say that the children are so emotionally, like they are so emotional that even if you neglect them for once, they'll feel like that ये मैम अच्छे नहीं है और मतलब somewhere we need to value everyone. हम भी कई बार ऐसा होता है अगर कभी किसी ग्रुप में वी आर हैविंग अ डिस्कशन एंड वी फील निगलेक्टेड तो हम उस दोबारा उस ग्रुप में जाने से या दोबारा वहां पे बोलने से पहले सोचते हैं या वी फील लाइक कि शुड वी स्पीक और नॉट तो हमारे माइंड में एक थॉट आ जाता है अचानक से कि शुड वी गो और नॉट सो देयर इज इफ वी आर फील मतलब इफ वी फील वैल्यूड समवेयर then only I'll be enjoying that place or then only I will want to go to that same place again, right? So these are some of the things that we'll be discussing today, starting with the very first question that I want to ask, right? Think of a student who was difficult to teach. Like you, we all are having like lot many experience of teaching and all, right? मतलब education level पे हमारे पास बहुत सारा experience होगा. Even there are teachers or there are people those who are in the session जिनका experience मेरे से ज्यादा होगा, right? Just want to ask you a question. एक student के बारे में सोचो जो आप अपनी like teaching journey में आप उस बच्चे से मिले हो who you feel like was difficult to teach, and now the question is actual question is what helped that child succeed? What is that one thing which you felt like कि okay मैंने ये किया तो this is the reason that the child actually like started learning, or you can say you made a difference in the child? Any one child in your all मतलब टिल नाउ की टीचिंग जर्नी में यू हैव मेट अ चाइल्ड जिसको पढ़ाना डिफिकल्ट था किसी भी रीजन की वजह से, and what made that child succeed? What is one thing, even if you haven't done anything, but you have observed that this is the thing which changed that child? Anything, any incident you want to share, anything you want to write in the chat box, you may share. Anyone?
Okay. Reinforcement, right? That's right. Anything else? Appreciation and motivation, positive attitude. Yeah. So there are number of things. Many of them I've already got in my previous sessions also. The things were all like related only. One of the thing was that we need to be emotionally, yeah, remedial classes. One of the like good things I can say, right? So yes, like if I simply talk about so emotional connect, we can say appreciation, we can say motivation, right? Like somewhere pushing the child to do, to try, right? Asking the child to make mistakes. So there are a number of things which we as a teacher cannot simply say that ये बच्चा नहीं करता है, नहीं करेगा, and we cannot leave that child simply. We as a teacher, we as an educator, we as a facilitator needs to find out one or the other way so that the child who's not able to can do it, right? So there are number of ways which we already know, but yes, discussing further, so there is just again a simple question from you all that student A, he always participates in any of your classroom activities, in any of the group discussions, in any of your classroom learnings, whatever you are teaching. And a student B who rarely speaks, बहुत कम बोलता है. Now, according like we as an educator, we have to answer two things: who learns more, and how do we know? Like who learns more? What do you think? Student A will learn more or student B will learn more? I guess the answer will be common. Everybody's answer will be the same. That is the student A. Yes, obviously, the one who participates always, like, right? Always, जो participant होगा, that student will surely like learn more. And how do we know this thing? Because somewhere अर्लियर ना अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग को और अगर हम आज की टीचिंग को कंपेयर करें तो शायद जो ट्रेडिशनल टीचिंग थी या जो मतलब अर्लियर लेवल पे टीचिंग थी जो अभी तक हम एक बेसिक लेक्चर मेथड फॉलो करते हैं उसमें स्टूडेंट बी होता है हमेशा दैट इज द स्टूडेंट्स रेयरली स्पीक्स एंड द टीचर इज ऑलवेज स्पीकिंग दिस इज समथिंग दैट वाज यूजुअली फॉलोड बट एक्चुअली में इन रियलिटी what we as a teacher are feeling now is that student A, who's always a participant, who always participates, who always speaks, who always asks questions, is the one who's actually learning. Because some आप में से ना मतलब जनरली एज अ टीचर हमने ये वर्ड्स कभी कभी कहे ही होंगे किसी ना किसी बच्चे को कभी ना कभी या किसी क्लास में जनरली कि अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो ना दैट मीन्स आई देर आर टू थिंग्स देर आर टू पॉसिबिलिटीज आइदर तो like everything is clear and the other thing is that nothing is clear, right? Now the first possibility cannot happen, right? Because simply if I am speaking something at the end of the session there must be one or two things in your head that won't be clear or you want to ask or you want to add on, right? So same goes with the students as well. If you think that you're in the 30 minutes of your class all the students were sitting quietly, they were listening to you and you have made a like मतलब you have where you have done a very good job कि मैंने किसी बच्चे को बोलने नहीं दिया and 30 minutes के लिए I have completed my lecture and all of them have listened, then my friends we are at fault, right? We are failing because if your students are not asking you questions that means they are not listening to you at all, वो नहीं सुन रहे हैं. Because अगर वो सुनेंगे वो बच्चे हैं हमसे ज्यादा आगे हैं उनकी शायद ऑब्जर्वेशन उनकी थिंकिंग पावर डिफरेंट है 30 की क्लास यू आर द वन स्पीकिंग और आई एम द वन स्पीकिंग मेरी थिंकिंग डिफरेंट होगी आप सबकी थिंकिंग डिफरेंट है सो समवेयर कुछ मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता कि आपके माइंड में उसके रिलेटेड कोई और चीज ना आई हो राइट यू मस्ट बी थिंकिंग ऑफ शेयरिंग दैट same goes with the students as well so if they are not asking you that means actually they are not listening you, right? So this is why the student who participates will be the one who learns the most. Okay, now moving towards the major topic that we have for today. It is what is inclusive education or what is inclusion. So basically, if I read this definition, it says every learner has equal opportunity to participate, learn, and succeed regardless of abilities, background, or challenges. Simply just making it a very simple in a very simple language, if I say, class में we are having 35, 40 students, right? उसमें all of them are not same सबके सब सेम नहीं है राइट
all of them don't have same thinking level. All of them might not be having same kind of interest in subjects, right? Maybe किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छा होगा, किसी की एसएसटी अच्छी होगी, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, किसी का म्यूजिक बहुत अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा. So we are having 35 different minds in front of us, and they all are having they should have equal opportunities to participate, to learn, to succeed, regardless of their abilities, their backgrounds, and their challenges. We cannot point out a student and say, ki, okay, last exam where you didn't go well, you didn't do well, now you don't do anything. No, or sometimes it happens. Like, for example, if I have to choose a student for some anchoring purpose, right? कुछ मुझे अगर कोई एक मान लो, चलो anchoring भी छोड़ो, just an example, that if I have to like कोई dance competition है स्कूल में, या कोई एक ऐसे ही कुछ मतलब function है कोई भी, and हमें किसी डांस टीचर ने मतलब प्रिपेयर कराना है स्टूडेंट्स को. Now there is a student A जिसने पिछली बार last time he participated in some dance and all activity, and actually he is not a good dancer, but he's interested in doing that, right? In learning that. In the next, like for example, in the next upcoming whatever we have, any of the functions or any of the activities of dance, right? If you being a teacher, you being a dance teacher, or you being your subject teacher is not taking that student just by saying that you don't know how to do, और आप अच्छा नहीं करते हो, मैं किसी और बच्चे को लेता हूँ जो अच्छा करेगा. Now this is something that where you are lacking, right? Where we as a teacher are lacking, because every student sitting in that class is good in one or the other thing, but we cannot point out a student saying that you cannot do this, you cannot do that, because if that child wants to try, that child has complete authority, that child has complete, लाइक यू कैन से, उसका पूरा पूरा हक बनता है कि वो उस चीज को ट्राई करे. वो 10 बार भी ट्राई कर सकता है. इफ ही और शी वांट्स टू ट्राई इट फॉर 100 टाइम्स, he or she is free to do that, right? So this is what inclusive education says, that we cannot differentiate every learner on the basis of ki this is the ability, the child is good in maths, okay, let the child do only maths. The child is good in science, let him do only science. No, we cannot do this. We are actually teaching every child every subject, right? Regardless of if the subject, if he or she is interested in it or not, right? Okay, so why inclusion matters now, why this kind of equality you can say, but I'm going to change the word in the next slides, right? So why this equality matters? Very first thing is that improved academic outcomes. Academic outcomes अच्छे होते हैं. अब simply, if I know I'm not good in maths, right? If I know I'm not good in maths, as a student, I know myself, right? As a student, हर बच्चे को अपना पता होता है. As simple as that. अगर उनको ये पता है ना कि हम मतलब हमें ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हमें ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, आई वांट टू डू दिस थिंग, आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग, तो बच्चों को पता है. वो इतने मतलब खुद से उनको जानते हैं वो कि दिस इज व्हाट आई लर्न, दिस इज लाइक दिस इज व्हाट आई मतलब आई एम गुड एट, एंड दिस इज व्हाट आई एम बैड एट. बट यस, अगर हम उनको इक्वली समवेयर ट्रीट करते हैं ना, treating them like कि it's okay if you don't know maths, then also practice, you will get to know. This will improve their academic outcomes. Then is the next thing is that better social skills. इस चीज से उनके सोशल स्किल्स डेवलप होंगे. मीन्स समवेयर जब हम इस इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके आते हैं, तो इनसे उनके सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं. दे बिकम इमोशनली गुड. देयर पीयर टीचिंग, जो उनकी एक मतलब ग्रुप डिस्कशंस, पीयर टीचिंग, डिबेट्स के एंड से वो डिस्कशंस में अच्छे हो जाते हैं, कनेक्शन बिल्डिंग में अच्छे हो जाते हैं. देन इंक्रीज कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा. रेदर देन पॉइंटिंग आउट एंड सेइंग कि ओके यू डोंट स्पीक गुड, इंग्लिश अच्छी नहीं है, डोंट स्पीक, और स्पीक इन हिंदी. Why to say a student who's trying to speak in English, why to say him or her that okay नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हिंदी में बोल लो. Rather than saying this, let's say that okay, you are trying very good, do good and try to speak more in English, right? This will increase the confidence of the child, that you are actually letting him try whatever he wants to. Then is greater empathy. Then is that is sharing things, right? Then we have okay, then we have positive classroom culture. Somewhere this why inclusion matters. Inclusion से positive classroom culture आता है automatically.
when you will stop finding out a group of students who are good in this, who are good in that, who are good in this, right? Automatically it will create a equality, automatically it will create a positive classroom culture, because we being a teacher won't stop anybody to do anything, right? अगर कोई कुछ भी ट्राई करना चाहता है, any subject, any field, any extra activities, any skill, the child is free to do. And somewhere you will notice this thing कि when you will stop always pointing out the student for not doing anything, the child will search out more and more to try something new and something better in your subject, in any other subject, or any other skill as well, right? So this is one thing which is important. Okay, now again a question. What barriers prevent students from learning? As a teacher, as an educator, right, as a facilitator, what are the things that you feel like कि this is the barrier which prevents the students from learning? Anything you feel like as a teacher you must have observed कि मतलब this is what I feel like कि इसीलिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं. Anything. Okay, I haven't got any of the answers. As a teacher, just okay, no interest in boarding syllabus. That's good. Biasness, this is one of the things. YouTube videos, students don't show interest in particular subject, right? Okay, so this biased word is very true, ma'am. Okay, partiality, right? Okay, so this is one of the things that I would say, that being partial, like being just saying कि okay, मतलब कई बार ना हम अनइंटेंशनली ये चीज करते हैं. हैव यू एवर फेल्ट कि कई बार ऐसा होता है, एवरी नाउ एंड देन हम कब जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो वी हैव दोज स्पेसिफिक 5 or 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? मीन्स लाइक दिस इज वन थिंग दैट इज देयर. हम ये चीज जानबूझ के नहीं करते एक्चुअली. दिस इज समथिंग विच आर लाइक हमारा एक माइंडसेट बन जाता है वैसा वाला कि वील गेट अ क्विक आंसर, हमें जल्दी से आंसर मिल जाएगा इस बच्चे से, इससे पूछ लो, इसको आता है, राइट? है मतलब अनइंटेंशनली दिस हैपेंस इन आवर क्लास कि हम बायस नहीं होना चाहते हैं, बट समवेयर वी गेट बायस्ड. whenever we ask a question, there are specifically 5 or 6 or 10 students, or like you can say 8 students in your class, जिनका आपको पता है कि वो बहुत अच्छे से आंसर करेंगे, एंड यू ऑलवेज मेक देम स्टैंड, राइट? कोई भी हमें स्पेसिफिक काम करवाना हो उनसे, फॉर एग्जाम्पल यू वांट अ बुक और अ नोटबुक फ्रॉम लाइक फ्रॉम योर टेबल और फ्रॉम समवेयर, यू विल आस्क सम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ओनली, राइट? उसका रीजन क्या? हमारी तो वो हैबिट बनी हुई है कि ओके दिस इज दीज आर सम ऑफ द नेम्स दैट वी रिमेम्बर. नेम हमें सबकी याद है, बट अगेन देर आर सम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें पता होता है कि बहुत क्विकली काम कर देंगे. उनके चक्कर में समवेयर वी निग्लेक्ट ऑल द अदर्स, दोज हु आर सेइंग कि मैम शेल वी, देयर वी बिकम बायस्ड. वहां पे हम बायस्ड हो जाते हैं. वहां पे ना अनइंटेंशनली हमने तो इस चीज को सोच के नहीं किया, बट समवेयर बाकी बच्चों के माइंड में ये जाता है, हम हमें क्यों ही हैंड रेस करना है, मैम ने इन्हीं से तो पूछना है हमेशा. मैम इज गोइंग टू आस्क देम ओनली, व्हाई टू व्हाई टू जस्ट रेज आवर हैंड्स, राइट? दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंस. Then is fear of public speaking, right, ma'am? Due to lack of confidence. This is also one of the things that public speaking is like बच्चे को ना आंसर आता होता है. अगर आप उसको मतलब लाइक इफ यू विल मेक दैट चाइल्ड स्टैंड, मे बी हो सकता है वो एक बहुत अच्छा आंसर दे, एक अनएक्सपेक्टेड सा आंसर दे विच यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, राइट? सो दिस इज समथिंग. कॉन्फिडेंस इज अनदर रीजन. अपनी ही क्लास में अपने ही फ्रेंड्स के सामने, if the child is not able to stand, if the child is not able to speak, there is something which is lack of confidence. And we as a teacher needs to build it. हमें मतलब as a teacher, as a facilitator, we need to build this, and we'll further discuss how to build this, right? Then next thing that we have is fear of failure, I can say, right? Fear of failure. Failure कैसे? कि if I being a teacher is asking question to my class, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको लग रहा हो कि पता नहीं मेरा आंसर सही है या नहीं है,
should I speak? अगर मेरा आंसर गलत हुआ तो then what will ma'am say, right? Will she be doing something, or will the students laugh? This is something, there is fear of failure. Then is language barrier. This is another reason that actually matlab hinders the learning of the students. Language barrier is that sometimes it happens, कई बार ऐसा होता है, ये चीज कभी कभी हमने तब ज्यादा फील करते हैं कई बार ना, डिफरेंट बोर्ड से, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम पीएससीबी टू सीबीएसई और टू आईसीएसई, कुछ वेरिएशन होती है बच्चों की, दे शिफ्ट फ्रॉम वन बोर्ड टू अनदर बोर्ड, राइट, अनदर लाइक बोर्ड में शिफ्ट कर लेते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन द सिलेबस, राइट, वहां पे एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कि समटाइम्स द स्टूडेंट्स नोज द आंसर इन इट्स बेस्ट फॉर्म, राइट, बट उसको उस लैंग्वेज में आंसर नहीं करना आता. That is why the student is not able to speak. The student is even not able to learn sometimes, right? Then is we have language, then we have fear of failure, then we have home environment. One of the things that we as a teacher lack, one of the things that we as a teacher lack, that is fear of, I can say, sorry, home environment, right? Home environment is another thing जिसकी वजह से शायद even if the child wants to study, even if the child wants to learn, वो चीज वो नहीं कर पाता है अपने उस extent में जितना उस child में caliber है, right? Sometimes it can be some family issues, it can be some normal family fights, it can be some like a lack of some you can say resources at home, right? So there are a number of things which may cause the child to okay learn, like ma'am has shared. Let me see. Okay, so ma'am, sir, okay. One situation came in class, like in class three, some students cannot do basic subtraction while others answers quickly. How can a teacher make this classroom inclusive and help all the students learn and engage, stay engaged? Okay. So this we are going to surely answer. I like surely answer you this question after a few slides, because maybe you will get the answer in my next slides. But if even if at the end of the session the answer won't be clear, that I'll be answering your question for sure. Okay. Now the next, moving to the next thing, every child is different. Now this is something we need to understand. Actually na, the thing is that everything we need to understand, because they are children. At the end we need to understand this thing that they are children, even if they are gen alphas, even if they are gen z's, whatever they are still children and they are different, and we as a teacher, we as an educator need to understand, and we as an educator needs to mold ourselves according to them. They won't get molded according to us. They will, but first we need to go to their level to make them understand and to make them rise to our level, right? So diversity exists in learning styles, abilities, interests, language, culture, family backgrounds, emotional needs. So मतलब हर बच्चे का ना अपना एक माइंडसेट है, हर बच्चे का अपना एक थॉट है, हर बच्चे का, अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन भी पूछूं ना क्लास में, like for example just asking a very simple question, showing them just say for example like मैं पेन दिखाऊं उनको, and I ask them to like explain or elaborate or just say a few words about this pen, तो आप ये नोटिस करोगे कि मतलब एक उसमें से उस पेन का कलर नोटिस करेगा, दूसरा उसकी कंपनी नोटिस करेगा, ब्रांड नोटिस करेगा, कोई तीसरा उसका लाइक मतलब बॉडी उसकी कैसी है, अच्छी है नहीं है वो नोटिस करेगा, कोई फोर्थ उसको किसी और पेन से कंपेयर करेगा. Now, just holding a pen in your hand, you are asking the child to explain 35 की class में, you will get at least 20 to 25 different things. 20 to 25 different minds will be there जो काम करेंगे कुछ एक नई चीज बोलने के लिए. So they are different. Their learning style is different. Their abilities are different. Their interest is different. Their language is different. Their culture may be different. Because sometimes होता है कि कोई और कहीं से shift होके like due to some transfer and all, तो culture different हो सकता है, उनकी family backgrounds different होंगी, उनकी emotional needs different होंगी. How emotional needs? For example, एक बच्चा है जिसको आप बहुत डांट रहे हो, then also उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब he is like free, like ऐसे कि कोई बात नहीं, हमने डांट दिया फिर क्या हो गया, it's okay. And the other is like even if you say him or her a word,
तो ही और शी विल बी लाइक बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस वाले मोड में आ जाएगी एंड लाइक क्राई, ही और शी विल स्टार्ट क्राइंग. दिस इज द डिफरेंस इन द इमोशनल नीड्स. So fair is everyone getting what they need. Now this is something we need to understand, that fair is everyone getting what they need. Equal, और there are two words जो हम next slides में discuss करने वाले हैं, equality and equity. There is a major difference between these two, right? So इस line का meaning हम तब समझेंगे कि what this line actually meant is fair is everyone getting what they need and not equal, right? So yes, this is the thing that I was explaining. Equity means different support according to their needs, and equality means same support. Like मेरे पास एक चीज है, मैंने सब में इक्वली डिवाइड कर दी, दो 30-35 स्टूडेंट्स, दे गॉट द थिंग इक्वली, राइट? द अदर वे इज दैट आई विल फाइंड आउट हु नीड्स हाउ मच and then I will distribute it according to their need, right? If the one, for example, just an example, I am having 30 pens with me and I need to distribute it in the class of 30. Rather than I am distributing one to each, why am I not seeing that already one child is having five and the other is having zero? I need to distribute it according to their need, right? What will that student having five will do with that one pen, right? But the one who's not having any will surely do something good with that. Just an example, it was, maybe we'll connect it with something else. But yes, which approach is more effective? This is it. It should always be equity over equality, right? Because the same question maybe one of the educator asked कि like class 3 का जो बच्चा है, he is not able to solve some basic questions, basic subtraction के questions solve नहीं कर पा रहा है, तो what can be done, right? So somewhere we need to focus upon equity, right? अगर अभी मैं ये बोलूँ कि okay, now I'm going to explain that same questions to the whole class once again, now that will be boring for the children, those who already know the answers, जिनको आंसर्स आते हैं, जिनको वो प्रोसेस आता है, जिनको वो सब्ट्रैक्शन के मेथड आता है, सॉल्व करना आता है उनको, उनके लिए वो क्लास बोरिंग हो गई. आपने उनके लिए वो क्लास बोरिंग कर दी, समवेयर आपने उनके लिए अपने सब्जेक्ट का जो इंटरेस्ट है वो कुछ पॉइंट पे कम कर दिया, right? So there we need to follow this pattern of equity. Nowadays equality is not the one, we need to focus upon equity, and that is why I said that fair is everyone getting what they need, and it's not about equal distribution, it's about what I need, right? So matlab maybe you must have seen a reel like going on in Instagram and all. तो उसमें एक वो दिखाते हैं ना, जस्ट वैसे आउट ऑफ द थिंग है, बट देन ऑल्सो जस्ट लाइक इन्वॉल्विंग दीज थिंग्स इनटू इट. जैसे like a girl is asking for water, and his partner, her partner is giving her lot many other things. For example, I am getting cold drink, I'm getting coffee, I'm getting any number of things and not water. So what is the need of all those things? What I need is water, and this is what I want. So this is, as a teacher, we need to understand that we need to analyze the child, what the child actually wants, and then only we can provide, and then only we can get that best of the results that we are expecting as a teacher, right? Understanding diverse learners. Now what type of learners we have in the class? सब इन सब से हम सब मिले हुए हैं. वन इज द एडवांस्ड लर्नर्स. एडवांस्ड लर्नर्स वो होते हैं जो शायद आपने पढ़ाया नहीं है ना मैम, हम ना ये ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, हमने ये यूट्यूब से देख रखा है, आप पढ़ाओ हम आपको आंसर करेंगे. दीज आर द एडवांस्ड लर्नर्स, जो शायद आपसे भी एक कदम आगे रहना पसंद करेंगे कि मैम जब हमें क्वेश्चन कराएंगी, मैम जब हमें चैप्टर रीड करवाएंगी, तो आई एम द वन हु विल बी आंसरिंग, राइट? देन इज द स्लो लर्नर्स. स्लो लर्नर्स मीन्स हो सकता है कि आपके एक बार बताने से उनको ना आए, आपके दो बार बताने से उनको ना आए, हो सकता है यू नीड टू रिपीट दैट सेम थिंग 2 3 और मे बी 4 times टू देम. दे आर द स्लो लर्नर्स. देन इज द इंट्रोवर्ट्स. अब ये इंट्रोवर्ट्स कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स, देयर आर टू काइंड ऑफ लाइक वर्ड्स जो आजकल बच्चे यूज करते हैं. इंट्रोवर्ट्स आर दोज जो जल्दी जल्दी किसी के साथ कनेक्शन नहीं बनाते. आई शुड से दोज हु स्पीक लेस, दोज हु मे बी, मतलब जो ज्यादा किसी के साथ सोशलाइज होना पसंद नहीं करते, दे आर द इंट्रोवर्ट्स. ऐसे वाले बच्चों को भी समवेयर उनकी लर्निंग भी क्या होती है, बाकियों से डिफरेंट होती है. देन इज स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज. दैट इज समवेयर कोई ना कोई उनको डिसेबिलिटी हो सकती है. इट कैन बी सम हियरिंग प्रॉब्लम, इट कैन बी सम विजुअलाइजिंग प्रॉब्लम, इट कैन बी सम लाइक एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई डिसेबिलिटी जिसकी वजह से उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम आए.
So there are four kind of categories that we are having, diverse learners that we are having with us. We need to deal with them actually. हमें इनके साथ डील करना होगा. अब ये हमारी एक ही क्लास में बैठे हैं. I am the only one who's teaching. I cannot expect कि जैसे for example I am going, I taught them, right? And so I went, I taught them, मैंने पढ़ाया. आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अगर क्लास 35 स्टूडेंट्स की है तो उन 35 के 35 को इक्वली समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, बिल्कुल भी नहीं आया होगा. हो सकता है आप उसी 35 की क्लास में से 10 स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर हो, 10 स्टूडेंट्स को लगता हो कि ठीक है मैम की समझ में आ जाती है, इट्स फाइन, एंड बाकी ऐसे हो या मतलब आगे 5 6 7 ऐसे हो जो कह रहे हो कि हमें तो कुछ भी समझ नहीं आता मैम क्या पढ़ाते हैं, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट, या वी डोंट नो मतलब व्हाट इज मैम टीचिंग, हमें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है. बिकॉज दीज आर द डाइवर्स लर्नर्स दैट यू आर हैविंग. दिस इज नॉट योर फॉल्ट, दिस इज नॉट एट ऑल योर फॉल्ट कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाना नहीं आ रहा. द थिंग इज वी जस्ट नीड टू बी एट देयर पॉइंट, हमें थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. देन वी कैन टेक ऑल ऑफ देम इक्वली, राइट. हम सबको तब साथ में लेके चल सकते हैं व्हेन वी एज अ टीचर विल चेंज. बिकॉज automatically they are children, they cannot change their behavior. We as a teacher, we as a facilitator needs to change our behavior, right? So yes, we are going to discuss some things further, but just an instruction for you all that in next 2 or 3 minutes the class will get over because of the short, like 40 minutes of time span that we have on Zoom app. So you need to rejoin from the same link. We'll be continuing the class from there only, right? So yes, universal design for learning. यूनिवर्सल डिजाइन है एक लर्निंग का. व्हाट इज इट, व्हाट इट सेज, वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, राइट. विल बी समवट क्विक, थोड़ा सा क्विक चलेंगे. Very first thing is principle one, that is multiple means of engagement. What are the ways in which you can engage your child? जिस चार मतलब हम कैटेगरीज या यू कैन से द डाइवर्स लर्नर्स वी हैव गॉट, उनको कैसे हम इंगेज कर सकते हैं, उनको कैसे हम एक मतलब क्या ऐसा कर सकते हैं क्लास में सो दैट दे ऑल कैन बी इंक्लूडेड इन द क्लास. बिकॉज ऑब्वियसली 30 मिनट्स की क्लास में आई कैन नॉट डू दिस थिंग कि 10 स्टूडेंट्स को मैं अलग से पढ़ाऊं, 10 को मैं अलग से पढ़ाऊं और 10 को मैं अलग से पढ़ाऊं. नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, वी ऑल नो दैट. बट येस, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कुछ ऐसे होते हैं जो विजुअलाइज करके समझते हैं ज्यादा जल्दी से, कुछ ऐसे होते हैं जो सुन के समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो शायद पढ़ के समझते हैं. तो देर आर स्टूडेंट्स, देर आर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, देर आर डाइवर्स लर्नर्स इन योर क्लास. उनके लिए on daily basis, what are the things that we can add in our teaching? One is choice boards, then is games, then is polls, then is storytelling, then is real life examples. This is how you can make your lessons more engaging, right? So simply storytelling हो गया, आप क्लास में storytelling करा रहे हो सकता है पहले 5 सुन रहे हो क्लास में, अब 15 सुनने लग गए, राइट. या फिर लाइक फॉर एग्जांपल कोई गेम्स है, making them learn in a fun way, that is gamifying your class, right? कैसे gamify कर सकते हो क्लास को कि just make them search out a game, a basic game with which you can make them understand. जैसे एक example देती हूँ मैं. Maybe some of you must be familiar with chemistry, right? Chemistry के वो elements हैं, वो periodic. So yes, we were at like storytelling, right?
सो स्टोरी टेलिंग है, पोल्स हैं, गेम्स हैं विच यू कैन यूज। अभी आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दैट केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल है, उसको डिस्कस कर रहे थे हम, राइट? सो व्हाट आई एज अ टीचर डिड इज, मैंने क्या किया था, जैसे वी नो कि उस पीरियोडिक टेबल को याद करना समवेयर इट बिकम्स डिफिकल्ट, राइट? तो एक तो हम सबने ये चीज ट्राई की होगी कि उसके ना उसके जो ग्रुप्स होते हैं उनका एक सॉन्ग बन जाता है, एंड विद दैट सॉन्ग इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर दैट पीरियोडिक टेबल, राइट? Another activity which can be done, or which I did with that same periodic table, is कि I got a printout of that periodic table which was blank, right? Blank था, उस blank periodic table में कुछ ऐसे basic alphabets लिखे हुए थे, just A to Z, simple alphabets, right? And I just gave them a simple, you can say a hint, or you can say just हम क्या कहते हैं उसको, जैसे उनको कोई भी एक सिंपल एक लाइन दी, दे नीड टू गेस विच व्हाट इज द एलिमेंट, एंड देन दे हैव टू फाइंड आउट कि वेयर इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ दैट एलिमेंट, राइट? सो आई जस्ट मेड देम रिमेंबर दोस 20 or 30 एलिमेंट्स विच आई वांटेड कि उन बच्चों को पता हो, राइट? विद जस्ट अ सिंपल गेम दैट आई विल बी saying some words, I'll be saying some, giving them some hints, and with those hints they need to find out what is the name of that element, and further they need to just place that element in its correct position. With this, what happened? They thought we are just playing a game, right? All of them were listening. They got to know many of the good, like with those hints, they got to know many of the properties of those elements. They got to know what is the symbol. They got to know where to place it. They learned a number of things, right? So this is how with the basic activity, like if I being a student saying कि मैम आज मुझे पढ़ना नहीं है, तो you being a teacher, हम उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हम पढ़ाएंगे, बट इन अ वे दैट दे वोंट गेट टू नो कि हमने पढ़ा भी दिया उनको, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, दैट इज चॉइस बोर्ड्स। चॉइस बोर्ड्स क्या होते हैं? चॉइस बोर्ड्स ना आजकल हम यूज करते हैं, इट इज काइंड ऑफ अ टीचिंग टूल दैट वी हैव। इसको हम खुद से भी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट माय स्टूडेंट्स टू जस्ट एन एग्जांपल, इफ आई से, सो आई वांट देम टू लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक राइटिंग प्रैक्टिस करानी है, या आई वांट एक फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश कम्युनिकेशन की इंग्लिश की क्लास है, एंड आई वांट देम टू फोकस ऑन देयर ग्रामर पार्ट, राइट? नाउ ग्रामर पार्ट के लिए मुझे कुछ राइटिंग पार्ट कराना है जो वो खुद से लिख सके, रेदर देन गिविंग देम अ सिंपल सिंगल टॉपिक। एक टॉपिक, सारे बच्चे वही सेम कॉमन टॉपिक लिख रहे हैं, उनको लेटर लिखने के लिए बोल दिया, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम और हर टू कम टू like your place to enjoy and all, rather than giving always that same part or same word or same thing to write. Why shall we not give them some choice? Just draw, like just write down 7 to 8 different writing parts on your board. It can be letter, it can be paragraph, it can be notice, it can be whatever 5 or 6 topics that are already covered in the class, that can be given with some different topics, right? Or it can be a story writing as well, right? It can be a story. It's not that you need to like, it's not that you need to choose 5 different like matlab 5 different ways of writing, like notice, or you can say story writing, article writing. It can be that you are giving only story writing, but the stories will vary for different students, right? तो एक ही मतलब आर्टिकल लिख रहे हो तो आर्टिकल के टॉपिक्स अलग अलग कर दो, दिस इज चॉइस बोर्ड। नाउ there will be 2 or 3 positive points in your class. At once, you are getting 5 or 6 articles which you will discuss in your further classes. आप बाद में उसको discuss कर सकते हो बच्चों के साथ कि this is what is written, this is what is the addition which you can do, right? Then is the like common thing will not be there. ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक है सबने सेम ही लिख रखा है, या मैं इनने इससे देख के लिख लिया, आई राइट फ्रॉम देयर। सो थोड़ी सी एक वो चीटिंग वाला जो केस होता है वो कम हो जाएगा आपकी क्लास में। देन इज द स्टूडेंट्स विल फील लाइक कि उसको ऐसा वाला टॉपिक मिला है, तो आई विल राइट द टॉपिक इन बेस्ट ऑफ द वेज, मैं एक बहुत अच्छा सा अच्छे वे में लिखना चाहूंगा। मीन्स दिस चॉइसेस आर रिक्वायर्ड nowadays, right? Then is polls can be conducted, then is some real life examples can be there. This is how you can increase the engagement of the children. Then principle 2 is multiple means of representation, means how you present your topic, how you present your things, how you present your teaching.
It can be through videos, it can be through images, it can be through some demonstrations, like simply showing them a chemical reaction which is taking place in the class, or simply showing them some, for example, कोई भी एक model के through you are teaching them some digestion process, you are teaching them anything, right? Then is some notes, some audios. These are some of the things which you can add on as a teacher in your class to present the things. ये थोड़ी सी ना अट्रैक्टिव हो जाती हैं और कुछ नहीं. अभी अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर एन इंस्टेंस इफ आई से, मैं जो ये अभी लाइक वी आर हैविंग दी स्लाइड्स इन आई एम हैविंग शेयरिंग दी स्लाइड्स विद यू ऑल. अगर मैं ये स्लाइड ना शेयर करके इन स्लाइड्स को अपने पास एक पेपर फॉर्म में रख लूं एंड आई कीप ऑन स्पीकिंग, will you all be seriously interested in the class? Maybe 50 or 60% of them will be like कुछ समझ तो आ नहीं रहा क्या चल रहा है क्लास में. So there is something, a change is required. You are actually visualizing a thing. Somewhere you are noticing the things. That is why you are getting interested into that. So way of representation needs to be changed. Then is means of expression. एक्सप्रेस करने की चीजें भी हम चेंज कर सकते हैं. एज अ लर्नर दे कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द थिंग्स इन अ बेटर वे, इन अ डिफरेंट वे, इन द वे दे वांट टू. जस्ट अ सेकेंड. So the way they want to, they can express the things by writing, drawing, speaking, presentation, models. देखो अभी जैसे एक मतलब हमने लास्ट में डिस्कस किया कि देयर आर स्टूडेंट्स दोज हु डोंट स्पीक बिकॉज ऑफ द lack of confidence they have, lack of public speaking they have, right? So why not to give them alternative? It's okay, कॉन्फिडेंस एक बार में बिल्ड होगा नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि उनको कभी चांस ही मत दो बोलने का. एक्चुअली we need to give them chance now and then, every now and then. But yes, because I want कि वो भी अपनी बातें express करे. As a teacher, I want कि वो भी चीजों को express कर पाए. Just give that child some alternative way. Just let's give them some alternative way. Like for example, rather than speaking, okay, let's do one thing. Let's write, right? आपने एक question पूछा, आपने एक question को speaking way में पूछा. You got to know that how many of the students are confident in your class. Now you want to know that जो जिसने hand raise नहीं किया, or the ones those who are having lack of confidence, do the students know the answer? Are they listening in your class? Then just give them an alternative. Ask another question. Now ask them to write in their notebooks. Just give a round in the class and you will get to know that how many of them are actually writing, right? इन अनदर वे एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है. जैसे कई बार ना कुछ ऐसे टॉपिक्स या कोई ऐसा चैप्टर होता है जो जनरली बच्चे बहुत लोअर लेवल से पढ़ते आ रहे हैं उस चीज को. कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हायर क्लासेस तक भी रिपीट होते हैं, राइट? तो हम थोड़ी सी अपनी एनर्जी सेव करते हैं. हम थोड़ा सा वो जो हमारी हमारे जो बच्चे हैं 35 माइंड्स दैट वी हैव विद अस, उन माइंड्स को हम यूज करते हैं. इन अ वे आस्क देम टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन. आस्क देम कि 5 के ग्रुप में ये वाले टॉपिक की प्रेजेंटेशन ना आप प्रिपेयर करके लेके आओगे. एंड 5 या 4 या 3 वट एवर बेस्ट सूट्स यू कैन गो विद, राइट? ग्रुप ऑफ 3 4 5, इवन इफ एन इंडिविजुअल इज इंटरेस्टेड, अगर सोलो कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो विद दैट चाइल्ड एज वेल. उनको बोलो कि आप आके पढ़ाओगे यहाँ पे. यू विल टीच द स्टूडेंट्स. यू विल कम हियर, प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, add whatever you want to. You may show them a video, you may show them some, you may show them some of the visuals, you may show them some for example, if I say some pictures, you may show them some animations, whatever you want to show, whatever you want to add on, you may just get it checked from me once and present it in front of the class. Now there are two things that will happen. First of all, their speaking skills will improve, their confidence will improve. Second thing is, you enjoy the class, the student will teach. Because अब उसको पता है कि उसको क्लास में आगे आके खड़े होकर सबको पढ़ाना है. वो अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग 100% चीज को प्रिपेयर करके आएगा. ऑब्वियसली हम एज अ टीचर उसको हेल्प भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, एंड शायद उस टॉपिक में कुछ एडिशंस भी करेंगे अपनी. इट्स नॉट दैट कि हमने बच्चे पे छोड़ दिया, बट देन ऑल्सो थोड़ा सा आपका काम इजी हो गया, उसने खुद पढ़ा. एंड व्हेन स्टूडेंट विल टीच स्टूडेंट्स, देन अगेन देयर विल बी अ थिंग कि वो थोड़ा सा बाकी बच्चों को भी होगा कि ओके, वील ऑल्सो बी डूइंग दिस थिंग, आई ऑल्सो वांट टू ट्राई. दिस इज समथिंग वी कैन डू टू लाइक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन चेंज करना है. सो यस, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन. Nowadays na, there are three things that are to be taken care.
what students learn, how they learn, and how they show learning, right? So what they learn, how they learn, and how they show learning. These are the three things that we have discussed in the previous slides. This is what they learn, that how they learn, right? कैसे वो learn कर रहे हैं through games and all, through videos, how they are representing the thing through videos, through demonstrations, through you being a teacher is representing, आप कैसे represent कर रहे हो video से, images से, and how they are presenting it, how they are expressing what they have learned through writing. Just वो भागी पर्दा पे सीन बना के भागी इधर पर्दा पे भागी okay. Next is flexible grouping. अब ये चीज ना आप क्लास में एक बार जरूर ट्राई करके देखना, की भी होगी, और एडिशनली हम आगे भी ट्राई कर सकते हैं. वन इज तो पेयर वर्क, राइट, विच मीन्स अब हमें ना सोशलाइज करना है. वी नीड टू सोशलाइज, राइट. हमें बच्चों को एक सोशल स्किल्स डेवलप करने हैं बच्चों में. दिस इज व्हाट लाइक एक्चुअली दिस इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स. हमें सोशल स्किल्स डेवलप करने हैं. सो इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि मैंने ग्रुप बनाया, मेरे फ्रेंड के साथ मैंने ग्रुप बनाया, मैंने एक्टिविटी की एंड दैट्स इट, दैट्स डन. नो, pair work, give your students pair work, right? Means two two का pair, every time it should be new, right? तो आपने दो दो का pair बनाया, मतलब let the students do any of the work according to your subject. You can give them any activity, you can give them any like मैथ्स है तो कोई सम सॉल्व करने के लिए दे दिया, साइंस है तो कोई टॉपिक रीड करने के लिए दे दिया, या लाइक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दे दी, इंग्लिश है तो कोई सिंपल कन्वर्सेशन इन द इंग्लिश, राइट, और जस्ट being doing a role play of the topic, or just asking them to write something, right, or any of the grammar topics, anything. Then small groups. Now from pair work to small groups where you need, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई प्रोजेक्ट वर्क करना है, where not two are not enough, you need 3 or 4 students in a group. So grouping में. Then is peer tutoring. This is one good thing that is done in generally schools में, ये चीज की जाती है, like classrooms में ये चीज हम follow कर सकते हैं. Always make, like आपकी क्लास में अगर 30-35 के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से ना कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ जो है वो स्लो लर्नर्स होंगे. आप ना बच्चों को क्या करो, जस्ट मेक देम, मतलब उनका ना ग्रुप बनाओ, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 का 4 का 5 का ग्रुप बनाओ, जिसमें 2 स्टूडेंट्स दोज हु आर गुड एट लर्निंग, 2 स्टूडेंट्स दोज हु आर एवरेज एट लर्निंग, 1 or 2 स्टूडेंट्स दोज हु आर लाइक स्लो लर्नर्स. नाउ दोज 5 or 6, आप उनको ये बोलो कि योर ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, लाइक मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वर्क कंप्लीशन, आपके टेस्ट, एवरीथिंग विल बी एनालाइज्ड. आपके पूरे ग्रुप को हम एनालाइज करेंगे. अगर क्लास में 5 ग्रुप्स बन गए हैं, तो उन 5 ग्रुप्स को एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, आफ्टर 15 days एनालाइज किया जाएगा कि व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट. और आपके जो स्कोर हैं, इट जैसे फॉर एग्जाम्पल आई कंडक्टेड अ टेस्ट, राइट, मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया. अब ऑटोमेटिकली आई नो दैट जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो 10 on 10 स्कोर करेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो 5-6 स्कोर करेंगे, या 2 स्कोर करेंगे, 3 स्कोर करेंगे, राइट. द स्लो लर्नर विल बी लाइक दैट, राइट. अपना काम कम करना है. व्हाट कैन बी डन, आपने वो ग्रुप बनाया, अब आप ये बोलो कि पूरी क्लास में ना, आई वोंट आस्क कि हर बच्चे के कितने मार्क्स आए हैं. यू विल बी डिस्कसिंग कि व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ द ग्रुप. टोटल स्कोर ग्रुप का क्या होगा. विल इट लाइक फॉर एग्जाम्पल 5 आर देयर, सो वट एवर विल बी द 50 है, 50 में से कितना स्कोर किया पूरे ग्रुप में, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, रेदर देन डिस्कसिंग कि कितने बच्चों ने 10 on 10 स्कोर किए, कितने ने 5 स्कोर किए, कितने ने 2 स्कोर किए. अब इससे होगा क्या, जो उस 5 के ग्रुप में स्लो लर्नर्स हैं और जो उस 5 के ग्रुप में एडवांस लर्नर्स हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे इन वन और द अदर वे, सो दैट उनका ओवरऑल जो ग्रुप का स्कोर है वो इम्प्रूव हो. This is one thing very, मतलब this is one of the good thing I feel like you may implement in your teaching. ये बहुत अच्छी चीज है कि ओवरऑल ना हर, मतलब वो 5 ग्रुप्स में आपस में एक कंपटीशन होगा. अब कंपटीशन जो है वो स्लो और फास्ट लर्नर्स में नहीं है. नाउ द कंपटीशन इज बिटवीन द 5 ग्रुप्स, एंड द 5 ग्रुप्स इन दैट, मतलब द 5 स्टूडेंट्स इन दैट ग्रुप विल हेल्प आउट ईच अदर टू स्कोर गुड. वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प करेंगे. मे बी उसमें से कोई मैथ्स में अच्छा होगा, मे बी उसमें से कोई साइंस में अच्छा होगा, मे बी उसमें से कोई
ओवरऑल अच्छा होगा. दिस इज यू मे ट्राई दिस. देन दिस इज ऑल अबाउट peer tutoring. देन इज मिक्स्ड एबिलिटी टीम्स. ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मिक्स्ड एबिलिटी टीम्स बना सकते हो. एंड peer tutoring में अनदर थिंग इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि एक बच्चे को ना टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, दूसरे को क्लैरिटी नहीं है. मेक द स्टूडेंट सिट विद हिम और हर, आस्क हिम और हर टू एक्सप्लेन द थिंग, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में आज मैंने बोला कि ओके मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, रीड दिस टॉपिक, एवरीबडी हैज रेड. कोई प्रॉब्लम आई, कोई क्वेश्चंस में डाउट है, अगर बहुत सिंसियरली पढ़ा है तो ऑब्वियसली डाउट होगा, राइट. आपके पास अगर 5 डाउट्स आए, जिसने डाउट नहीं पूछा उससे क्वेश्चन पूछो. नाउ दिस विल व्हाट विल हैपन. एक तो आपको ये समझ में आएगा कि जिसने भी द वंस दोज हु आर नॉट आस्किंग यू एनी डाउट्स, आर दे एक्चुअली क्लियर विद द थिंग्स. सेकंड थिंग इज व्हेन दे विल आंसर, देयर क्लैरिटी विल बी देयर, उनकी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. और जब एज मेट्स एक दूसरे को समझाते हैं ना, तो समवेयर हमसे ज्यादा क्लैरिटी उन बच्चों को अपने एज मेट्स के साथ होती है. दिस विल श्योरली हेल्प देम, राइट. सो दीज आर द 4 things that you may do in your class. Yes, then we have, okay, now the question, this is one of the tricks that you can do. Inclusive question technique है ये, this you can do in your class. Instead of asking who knows the answer, हम ये चीज करते हैं क्लास में कि okay, I'm asking a question, those who know raise your hands. Now those who know won't raise their hand. Those who want to answer will raise their hand. This is what will happen. Rather than saying this, try saying this, that take 30 seconds to think, and now you need to think, pair and share. That is, यहाँ पे ना वो वाली चीज खत्म हो जाएगी. When we say that our students are having lack of confidence खत्म हो जाएगा. यहाँ पे कैसे होगा, या फिर you will get to know कि how many have answered. जैसे इफ आई एम हैविंग अ पार्टनर सिटिंग विद मी, आई नो द आंसर, और उसने भी कुछ आंसर सोचा, मैंने भी कुछ आंसर सोचा, वी आर डिस्कसिंग विद ईच अदर. हम दोनों को ये समझ में आएगा कि अच्छा इसने गलत सोचा था या मैंने गलत सोचा था या दोनों का गलत है. मीन्स समवेयर व्हेन वी विल बोथ डिस्कस एंड देन एक ओवरऑल डिस्कशन के बाद आंसर आएगा, तो आप देखना आपके नंबर ऑफ हैंड्स इन द क्लास विल बी मोर. जो हैंड रेज होंगे ना वो क्लास में ज्यादा होंगे. अगर आप एकदम से पूछते हो कि हु नोज द आंसर, तो 5 और 6 होते हैं जो बिना सोचे समझे जिनको आता होता है, हैंड रेज कर लेते हैं. रेस्ट सोचना भी जरूरी नहीं समझते. दे आर लाइक ओके बस ये आंसर कर देंगे, हमें क्या. बट वेन यू विल लेट देम थिंक, दे विल थिंक. इवन इफ दे आर रॉन्ग, दे विल श्योरली रेज देयर हैंड. दिस इज वन थिंग दैट यू कैन एड ऑन. देन इज सपोर्टिंग गिफ्टेड लर्नर्स. नाउ यू कैन डू दिस थिंग, दैट ओपन एंडेड टास्क आप दे सकते हो उनको, रिसर्च प्रोजेक्ट्स दे सकते हो आप उनको, देन लीडरशिप रोल्स दे सकते हो, एक्सटेंशन एक्टिविटीज दे सकते हो. ये सब कुछ क्या है, मतलब जो बच्चे आपको लगता है गिफ्टेड लर्नर्स मींस, यहाँ पे इफ आई वांट टू डिफाइन व्हाट इज गिफ्टेड लर्नर, तो गिफ्टेड लर्नर मींस समवेयर या तो जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जो बहुत ही एडवांस लेवल पे हैं, वन थिंग. या फिर ऑपोजिटली इफ आई हैव टू से, बिकॉज ऑलवेज गिफ्टेड का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही अच्छे वाले गिफ्टेड ही होंगे. गिफ्टेड लर्नर मींस जिनका लर्निंग लेवल इतना अच्छा नहीं है, उनकी कुछ और चीजें अच्छी हैं, दे आर गुड एट समथिंग एल्स, राइट. दे आर गुड नॉट इन लाइक एजुकेशन लेवल, सब्जेक्ट लेवल पे नहीं, स्पोर्ट्स लेवल पे, किसी लीडरशिप लेवल पे वो अच्छे हैं. दिस इज व्हाट गिफ्टेड लर्नर इज. सो इफ दे आर एडवांस्ड, गिव देम रिसर्च प्रोजेक्ट्स. बिकॉज एक चीज है, एडवांस्ड लर्नर्स भी आपकी क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. रीजन, क्योंकि वो खुद पढ़ के आ गए हैं. नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू, बिकॉज उनको वो चीज बोरिंग लग रही है. ऑलरेडी जो मुझे चीज पता है, अगर मुझे कोई सामने वाला पढ़ा रहा है, इट विल बी बोरिंग फॉर मी, मेरे लिए वो बोरिंग हो जाएगी, राइट. तो मतलब मैं क्लास में या तो डिस्टर्ब करूंगी या तो फिर हेड डाउन करके बैठ जाऊंगी. दिस इज वन थिंग दे ऑलवेज डू. मैम ये तो हमें आता है, आप पढ़ाते जाओ, हम सुन रहे हैं. वो एक लेजी सा फेस बना के बैठ जाते हैं. So you should be ready for those advanced learners. Give them some research projects. कि okay, ये चीज तो पढ़ी हुई है ना, do one thing, इस चीज को सर्च करके आना. So now the child will be interested in your subject because now you're giving something out of the box. जो वो नहीं पढ़ के आया वो दे रहे हो उसको, right? Then is leadership roles. This I feel like is for those जो थोड़े से slow learners हैं, स्लो लर्नर्स हैं, कम सोशल हैं, इंट्रोवर्ट्स हैं, राइट. जो शायद थोड़ा सा कम बोलना पसंद करते हैं, उनको आप ये चीज दो, लीडरशिप रोल्स दो. मेक देम द मॉनिटर ऑफ द क्लास. ये चीज हम करते हैं उनके साथ जो सबसे ज्यादा बोलते हैं. वो भी एक अच्छी चीज है कि दोज हु आर द वन हु स्पीक्स द मोस्ट, उसको मॉनिटर बना दो, अपने आप चुप कर जाएगा, अपने आप क्लास हैंडल कर लेगा.
give responsibilities to the introverts, give responsibilities to the shy person, give responsibilities to the ones जिनमें lack of confidence है, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप छोटी छोटी सी अप्रिसिएशन करोगे उनको, मतलब एक स्मॉल लेवल पे जब आप फीडबैक प्रोवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करेगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सपोर्ट द गिफ्टेड लर्नर्स. देन इज लैंग्वेज दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस. Now this is something we always need to add on at the end of the things, that avoid saying that this is wrong, you don't understand how to do this thing. Don't use these words, avoid these things. Rather than this, let's try another way. You are improving, tell me your thinking. फॉर इंस्टेंस इफ यू फील लाइक कि आपने ना बच्चे को 2 बार समझा दिया, उसको समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, या आपने कोई टॉपिक बताया, आपने अपनी थिंकिंग बता दी उसको, अब बच्चा जो है वो कंफ्यूज है, why shall we not ask that child कि okay what do you think about this, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, what do you think कि ये आंसर कैसे आया. जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ना ये चीज, तो शायद वो अपनी थिंकिंग बताएगा, और जब वो अपनी थिंकिंग बताएगा you will actually get to know कि okay this is how the child is thinking and दिस इज वेयर आई नीड टू क्लियर दैट चाइल्ड, यहाँ पे मुझे इसको क्लियर करने की जरूरत है. देयर द चाइल्ड इज थिंकिंग रॉन्ग और देयर द चाइल्ड इज थिंकिंग डिफरेंट फ्रॉम मी, राइट? बिकॉज मेरे लिए एक क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो सकता है, दूसरे किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है, राइट? सो मे बी बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, मे बी माई वे ऑफ थिंकिंग इज नॉट राइट, और मे बी योर थिंकिंग ऑफ वे इज नॉट दैट वे इज द वे आई एम थिंकिंग, राइट? सो दिस इज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू नीड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, you need to use this language rather than saying that no, you don't know, you don't understand. Okay, now you all need to answer. I have, like, I'm speaking from last, I guess, 10, 20, 40 minutes. So yes, a grade 7 student never volunteers answer. ग्रेड 7 का बच्चा है, कभी भी क्लास में आंसर वॉलेंटियर नहीं करता, मीन्स ही और शी नेवर रेजेस हैंड, कभी भी आंसर करने सोच ट्राई भी नहीं करता. What could be the reasons and what would you do? There are two questions you need to answer. That what could be the reason that the child is not answering? वैसे हम ये discuss कर चुके हैं already. So expecting lot many answers from you all. And what could you do as a facilitator so that the child may start speaking in the class or may start volunteering the answers? Let's check your previous knowledge. May I repeat the question? It is simply that, okay, I'm getting the answer. Okay, peer pressure, it can be, right? Maybe we were missing this part. It can be a reason that peer pressure is there. कई बार ऐसा भी होता है ना कि maybe the child knows the answer, but बाकी बोल देते हैं नहीं नहीं, we don't know the answer, you don't answer. This is one thing. Okay, any other things? And what would you do in this case? Lack of interest is there, right? Fear of making mistakes, right? Then is okay, build a supportive, non-judgmental classroom environment, encourage participation for small groups. Right. Very true. Very true. Hesitation can be, nervousness can be, and build a supportive, yes, non-judgmental classroom environment. Prepare, मतलब हम एक provide कर सकते हैं बच्चे को. Encourage participation, encourage कर सकते हैं. Then is asking them simple questions rather than right. अगर हमें confidence build करना है तो ask the simplest of the question you want, right? We would help the child gain confidence by asking simple questions, right? Asking simple questions will level up the confidence, yes.
Okay. So, okay, moving further. Yes, peer group discussions we can do, hesitation and lack of consideration may be there. So yes, these are all the things that we have already discussed. And right, even additionally, I have got to know some of the points which maybe I haven't discussed. Yes. Next is assessment for inclusion. Now again, if I'm teaching in that manner, why am I not judging or why am I not assessing them in the same manner? अगर मैंने क्लास में पढ़ा मैं इतने इंटरेस्टिंग वे से रही हूँ तो why am I using that same previous old method to assess their understanding? अगर मतलब वही सेम देखो सिंपल सी चीज है अगर मैंने वीडियोस के थ्रू पढ़ाया अगर मैंने गेम्स के थ्रू पढ़ाया अगर मैंने उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स लाइक सॉरी अगर मैंने उनको पढ़ाने के लिए टीच करने के लिए अलग अलग मेथड्स फॉलो किए सो व्हाई एम आई यूजिंग दैट सेम पेपर एंड पेन मेथड टू चेक देयर नॉलेज असेस करने के लिए नॉलेज को सेम चीज क्यों यूज करनी है आई एम नॉट सेइंग दैट यू कैन नॉट यू कैन completely like remove that method. No, we cannot, and we shall not even, right? That is equally important. That is equally important कि we need to take those exams, we need to take those written tests that are equally important. But yes, somewhere हम कुछ inclusion के लिए कि everybody should answer because कई बार ना again the same thing that there are students those who are good at speaking, those who are good at listening, those who are good at like thinking or those who are good at framing answers in their head बट दे आर नॉट गुड एट राइटिंग तो होगा क्या जिन बच्चों को आता भी होगा वो लिखने के टाइम पे आंसर क्या कर देंगे दे वोंट बी एबल टू राइट द आंसर्स प्रॉपरली सो वहां पे जज करने के लिए we should have some quiz, we should have some presentations, we should have some posters, we should have some oral responses, we can have some projects. Now these all are totally dependent upon what subject you are teaching. क्विज तो एक बेसिक क्विज ये भी है मतलब आजकल तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे ना we have that कि you ask chat gpt to frame quiz of 20 questions और एक वो लिंक प्रोवाइड करेगा you may share the link in your whatsapp groups if you have you may share it in your some of the school apps if you have ask the students to attempt that test आपके लिए इजी हो गया कि ऑलरेडी उसमें मार्क्स आ जाएंगे बच्चे के आपको चेक नहीं करना पड़ा यू हैव इजीली सेट अप अ पेपर ऑफ 20 क्वेश्चंस दे विल राइट द आंसर्स उनको लिखने में और भी मजा आएगा उनको मतलब आंसर करने में ज्यादा मजा आएगा बिकॉज दे आर यूजिंग देयर फोन्स सो use technology in a better way so this is how you can assess your learning your understanding your, that you have taught the students one of the major things that I feel like we need to do that is partnering with parents. This is one of the important things for nowadays. Ki we need to actually partner the parents with us so that the students can learn in a better way. Understand learner needs because as a teacher कई बार हम समझ जाते हैं but as a parent वो नहीं समझ पाते कि उनके बच्चों को क्या चाहिए right sometimes ऐसा होता है ना कि parents start comparing their children with other children कि वो तो मैथ्स में अच्छा है हमारा बच्चा तो मैथ्स में इतने कम नंबर लेके आया है एक्चुअली दे नीड टू अंडरस्टैंड सो जब तक वो हमारे पार्टनर्स नहीं बनेंगे वी एज एन एजुकेटर वी एज एन एजुकेटर समवेयर विल ऑलवेज कीप ऑन लैगिंग बिकॉज जब वो बच्चे को एक इन्वायरमेंट घर पे ऐसा मिलता है ना कि पेरेंट्स हमेशा कंपेरेबल इन्वायरमेंट में रहते हैं कि यू नीड टू डू दिस यू नीड टू डू दैट रेदर देन आस्किंग देयर चाइल्ड कि व्हाट द चाइल्ड एक्चुअली नीड्स टू वांट्स टू डू राइट सो दिस इज समथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड देन इज बिल्ड कंसिस्टेंसी इस चीज से कंसिस्टेंसी भी बिल्ड होगी आपने यहाँ पे कुछ अच्छी चीज करवा के भेजी घर पे बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा एंड पेरेंट्स आर हैविंग एक्सक्यूजेस कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है जब वो हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे उनको भी उस चीज से मतलब दे विल ऑल्सो गेट टू नो कि ओके दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द स्कूल दिस इज हाउ वी नीड टू टीच आवर किड दिस इज हाउ वी नीड टू डील विद आवर kid automatically consistency will build and improve outcome obviously when there will be when it will always be कि हम बच्चे की लर्नर की अंडरस्टैंडिंग लर्नर को अंडरस्टैंड करेंगे उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे कंसिस्टेंसी बिल्ड करेंगे then automatically outcomes will also be there outcomes improve होंगे ही होंगे so this is why as an educator we need to partner with the parents to make best out of the learners that we are having nowadays right so yes, thank you so much, everyone. This is every child can learn, just not on the same day, but in the same day, right?
Yes, so any of the questions you want to ask, the question which was asked by one of you, if you have got the answer, please let me know. Or if you want me to elaborate, I'll surely do it for you. And any additions you want from your side. Yeah, certificate link I'll be sharing with you. And here is the link I'm sharing with you all. This is a feedback form you all need to fill, right? Just kindly fill the feedback form and I'll be sharing the certificate link with you right here.